Hello everyone, hope you are all well and enjoying my videos. Today we will going to discuss the next topic in general anatomy, that is skeletal system. Not this one, this is just for fun, the real skeletal system. Okay, so without wasting any time, let's start. First of all, introduction. The term skeleton is derived from a Greek word skeletos, the meaning of which is dried up, sukha dena. As you all know, skeletal is a dried part of the body. So the skeletus means the dried up. The skeleton of the body is composed of bones and cartilages. Both bones and cartilages are made up of this specialized connective tissue. The name of that is skeletal tissue, which bears the weight without bending and has a considerable tensile strength. Skeletal tissue से बने होता है bones and cartilages, both the things, जो अपनी बॉडी का weight bearing करते हैं without bending. Okay. Now the type of the skeletal. Mainly two types are there of the skeletal. One is axial skeletal and the second is appendicular skeleton. Axial skeletal. Axis means, all you know, it is the central midline of the body. So from the name itself suggests what is the meaning of axial skeletal. The axial skeletal consists of bones and cartilages that lies close to the central axis of the body. मतलब जो bone body की central axis midline से जुड़े हुए हैं, वो सब bones axial skeletal में count होंगे. They includes the first one, skull. Skull, it consists of two sets of the bone, the cranial bones and the facial bones. उसमें दो टाइप के bones होंगे, एक होगा cranial bones, एक होंगे facial bones. Skull में total 28 bones हैं. Auditory bones को आप separate कर दो तो you can say 22 bones are there in the skull. The next one are auditory bones. They are the three small bones present in each middle ear cavity. They are malleus, incus and stapes. These are the bones of auditory canal. Then hyoid bone, it is located above the larynx and below the lower jaw. Larynx के ऊपर और lower jaw के नीचे, somewhere over here. It is a very small tiny bone, hyoid bone. Then comes vertebral column or backbone. This consists of 33 vertebrae, in which 7 are the cervical vertebrae, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 4 coccygeal. However, the sacral vertebrae, they fuse to form a one single bone that is known as sacrum, and 4 coccygeal vertebrae fuse to form a one single bone that is called coccyx. By this way, you can see 7 plus 12 plus 5 plus 1 sacrum, 1 coccyx. Total 26 bones are there in the vertebral column. Right? The fifth one is rib cage. It forms the bony and cartilaginous framework of the thorax. जो thorax के bones है, ठीक है? The bones forming the rib cage includes 12 pairs of ribs. दोनों तरफ 12 ribs है, means total 12 pairs, means total 24 bones associated with the costal cartilages and the midline center bone, that is the sacrum. Okay, so कितने हो गए axial skeletal में bone? 22 from the skull, 6 from the auditory bone, 1
hyoid bone, 26 vertebral column, and 12 pairs means 24 plus 1 sternum 25. Total कितने होंगे? 80. Do you know how many bones are there in whole human body? ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किए है, याद भी नहीं रहता. तेरे को मालूम है 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है. आइला तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे क्या? Even मुन्ना भाई also know. Okay, so don't worry, हमें तोड़ना नहीं है, हम जोड़ने वालों में से हैं. Okay, here you can see from the picture the labeling marketed with the demarcated with the blue color. They are the bones of the midline, central, axial skeletal, and the bones which are labeled with the red color, they are from the appendicular skeletal, right? So the next type, appendicular skeletal. Here the appendicular skeletal is bilaterally symmetrical and comprises the bone of the upper and lower extremities. Upper limb और lower limb के जो भी bones है वो appendicular skeletal में आएंगे, including bony girdles which anchors these extremities with the axial skeletals. Means दो bony girdle है, एक shoulder girdle आएगा, एक pelvic girdle आएगा, जो axial skeletal के bone को appendicular skeletal के bone के साथ join करते हैं. ठीक है? So in simple language, appendicular skeletal means which includes those bones, they are situated in the limbs, both the upper limbs and lower limbs, right? So they include, one is pectoral girdle. It consists of paired scapula and clavicle. Scapula and clavicle are the bones. तो दोनों तरफ एक एक स्कैप्यूला है जो यहाँ पे बैक ऑफ चेस्ट पे जो होता है, दैट इज द स्कैप्यूला, एंड हियर द हॉरिजॉन्टल वन, इट इज द क्लेविकल. ओके, देन बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब. ईच अपर लिम्ब कंटेन्स द ह्यूमरस विद इन द आर्म. आर्म का जो बोन है उसको ह्यूमरस बोलते हैं. देन रेडियस एंड अल्ना विद इन द फोरआर्म. फोरआर्म के जो दो बोन है दे आर रेडियस एंड अल्ना. Then here comes the carpal bones. They are 8 in number. The metacarpal bones, they are 5 in number, and phalanges, they are 3, 3, 3, 3 and 2, means 14 in numbers. Okay, so in upper limb total the bones, humerus, then radius and ulna, 8 carpals, 5 metacarpals and 14 phalanges. तो पेक्टोरल गर्डर के भी इसमें ऐड कर दो स्कैप्यूला एंड क्लेविकल, तो कितने होंगे? एक साइड अपर लिम्ब में एक स्कैप्यूला, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 5, देन 8 कार्पल्स, 5 plus 8 13, 13 plus 5 मेटाकार्पल्स, कितने हुए? 18, 18 and 14 phalanges, 32. So 32 from one side, 32 from other side, means total 64 bones in upper limb. Then comes pelvic girdle. It consists of 2 hip bones. It's a true girdle because it is united anteriorly as well as posteriorly. Girdle means एक ऐसे closed figure होता है, एनक्लोज करता है दोनों साइड से, दैट इज कॉल्ड गर्डल. पेल्विक गर्डल इज ट्रू गर्डल बिकॉज इट इज एसोसिएटेड hip bone, right and left hip bones are attached with each other anteriorly as well as also posteriorly. They close it from anterior and posterior both sides. That's why it's a true girdle. While in pectoral girdle, it closes from above and sides only. The lower part is formed by the muscles and ligament, not by the bone. That's why it is called the false girdle. Pectoral girdle is called false girdle, while pelvic girdle is called true girdle. And bones of the lower limb, each lower limb contains the femur,
within the thigh, then tibia and fibula within the leg, then the tarsal bones, they are 7 in number, metatarsal 5 in number, and phalanges 14 in number. Additional to this, the one separate bone is also present just in front of knee joint, that is patella. Okay, so now lower limb के कितने bone होंगे? One is hip bone, then femur, then patella, then tibia and fibula. 5 plus 7 metatarsals, tarsals, 7 tarsals, 5 plus 7, 12 plus 5 metatarsal, 17 plus 14 phalanges, total 31 from one lower limb. So both the side 31 plus 31 62. So 62 lower limb के हुए और 64 upper limb के हुए, that we have already calculated. Okay, so total 80 bones from the skeletal, axial skeletal, and 126 from the appendicular skeletal. तो हो गए total 206. So now I think everyone is clear how many bones are there and where they are situated in our body. Now the functions, basic functions of the bone. The first one is they form the rigid framework of the body to give it a shape and support. अगर skeletal नहीं होता तो हम straight खड़े भी नहीं रह पाते, तो पूरा एक shape और support देता है body को. The second function is to provide the surface for the attachments of the muscles, tendons, ligaments, etc. Muscles और ligaments सबको attach होने के लिए surface provide करता है. The third one, it serves as a lever for muscles to bring about movement. Muscle का जो हमने डिस्कस किया था ना लास्ट टॉपिक में, लेक्चर में, कि origin होता है, insertion होता है. If you are not aware of that, repeatedly watch that video and then comes here. Okay, so muscle का origin and insertion है, वो जब move होता है तो वो भी bone के ऊपर move होता है, तो उस टाइम जो bone है वो उसका lever, not LIVER lever, it's a LEVER lever, तो एक मीडियम प्रोवाइड करता है मसल्स को मूवमेंट करने के लिए. द नेक्स्ट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट दी certain viscera, or you can say organs. Brain is protected by the skull. Okay, lung and heart are protected by the ribs. So by this way it protects the viscera and organs from the external injury. The next important function, it contains the bone marrow, which is a factory of blood cells. RBCs bones में से ही produce होते हैं. It's a storehouse of calcium and phosphorus. About 95% of phosphorus within the body is deposited in the bones and teeth only. तो calcium और phosphorus का एक storehouse है. Some bones around the nose contains large cavities filled with the air. उसको हम nasal sinuses बोलते हैं. Sinus, you all know, we have discussed in terminology lecture. Go through it if you not remember. Sinus means a space within the bone which is filled with the air. तो मोस्टली वो नोज के आजू बाजू होता है. तो वो वाले बोन के जिसके अंदर स्पेस में एयर भरी हुई है, those bones affects the timbre of the voice. स्पेस जिसका बड़ा है उसकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड रहेगी. जिस लोगों में बोन में स्पेस कम है उसकी आवाज़ थोड़ी सी लो पिच रहेगी, like that. So it affects the quality of the voice, right? Then comes microscopic structure of the bone. Structurally, the bone is very highly vascular, mineralized connective tissue. It consists of cells and dense intracellular matrix which contains both the organic and inorganic matter. The organic material is made up of collagen fibers, and the function of is to provide the resilience to the bone, while inorganic material is mainly made up of calcium phosphate, and it provides the
हार्डनेस एंड रिजिडिटी ऑफ द बॉन्ड. ओके, सो ऑर्गेनिक मटेरियल बॉन्ड को रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, वाइल इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो बॉन्ड को उसकी रिजिडिटी और हार्डनेस प्रोवाइड करता है. सो बोथ दी materials are important for the bond. Bond is mainly made up of three components. The first one is cell, second one is ground substance, and third one is fiber. The cells कितने टाइप के होते हैं? तो there are three types of cells present in the bond. They are called osteoblast, osteoclast, and osteocytes. This is a very important viva question, as well as it can be asked in MCQ or one-liner. Cells of the bones. They are osteoblast, osteoclast, and osteocytes, and the function of these cells is to provide, it helps in remodeling and regeneration of the bone. जब bone का fracture होता है तो bone अपने आप जो जुड़ जाता है, that process is called remodeling and regeneration. So that occurs with the help of this type of cells. The next component is ground substance, which contains proteoglycans, glycoproteins, many minerals, and water, while the third component is fiber, which is mainly made up of type 1 collagen fibers. So these two components, ground substance and fibers, combinedly we can say it as a intracellular matrix, जो बाद में mineralized हो जाता है. So okay, that is the microscopic structure of the bone. Now a very important topic, that is classification of the bone. It is a very important short notes for you. That is classification of the bone. Bones are classified according to the shape, the structure, and their development. उनका शेप कैसा है उसके ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं उसको, स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे क्लासीफाई होता है, और फ्रॉम वेयर इट डेवलप उसका क्लासिफिकेशन होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप. सो डिपेंडिंग ऑन द शेप द बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. शेप कैसा है उसके ऊपर, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, न्यूमेटिक, एंड sesamoid bones. First of all, here you can see from the picture, these are the different varieties of the bone. This is the long bone, example of the long bone. This is the a short bone, metatarsal. This is also a short bone, the patella. It is example of the sesamoid bone. This is the skull bone, parietal bone, example of the flat bone. This is a very irregular in shape, you can see it is the vertebra, example of the irregular bone. And here you can see the space which contains the air. This is the example of the pneumatic bone. Okay, first one, long bones. They are the bones in which the length is more than the width and their thickness. जिसकी लेंथ ज़्यादा है, they are the example of the long bone. And these are the common features of the long bone. बॉडी के हर एक long bone में same common characteristics होती है. The one is they consist of three parts, one elongated shaft and two expanded end. आपने previous picture में देखा, here you can see this is the example of long bone. So this is the elongated shaft and these two are the expanded ends, right? They contains the medullary cavity filled with the bone marrow. जो shaft है बीच में उसमें एक cavity होती है, space होता है, that is called medullary cavity, which is filled with the bone marrow. They ossify in cartilage. Ossify or ossification is a new word for you. It is your separate short note, but right now just remember ossification means development. Means जो bone cartilages में develop होते हैं उसको cartilaginous bone कहते हैं. तो सभी long bone body के cartilage में से develop होते हैं.
The fourth feature is they lie vertically in the body. If you remember the anatomical position, all the bones of the limbs, upper limb or lower limb, they all are situated in vertical direction. They are situated vertically in the body. So mostly both the limbs, upper limb and lower limbs, bones of both the limbs are example of the long bones. They are weight bearing, weight bear करते हैं body का, and they are found in limbs and acts as a lever for muscles. मसल्स के लिए मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट के लिए वो लीवर का काम करते हैं. सो दिस 6 आर द बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉन्ग बोन. द एग्जांपल्स ऑफ द टिपिकल लॉन्ग बोन्स आर bones of the upper and lower limb, means humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula, like that. Okay, now one exception, that is clavicle. It is the example of the long bone which lies horizontally. You have read in above 6 features, all the bones of the long bones are situated vertically, but here clavicle, it is the bone that is situated horizontally. All long bone developed from the cartilage, while clavicle developed from the membrane. All long bones have a medullary cavity, but clavicle doesn't have a medullary cavity. So this is also a very important one-liner or MCQ, or you can say viva question. एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं how clavicle it differs from the other long bone. So it differs from the other long bone in a 3 way. It is situated horizontally in the body, यहाँ पे है horizontally है. It develops from mainly membrane, and the third one, it doesn't have a medullary cavity. So remember this. Short bones are small bones in size. As the name suggests, they are small in size, usually cuboidal in shape and presenting the 6 surface. These bones are found in wrist and foot, means carpals and tarsals are the examples of the short bones. The flat bones, as the name suggests, they are flat and shallow plate-like bones. The examples of the flat bones are bones forming the cranial vault, means ऊपर के जो बोन है स्कल के, फ्रंटल, parietal, occipital, they are the example of the flat bone. And another bone that forming the thoracic cage, means all the ribs, sternum, scapula, तो thorax का पूरा केज बनाते हैं आगे पीछे साइड में से. They are the example of the flat bones. The irregular bones, as the name suggests, they are highly irregular in shape. Hip bone, vertebrae and bone forming the base of the skull, they are the example of the irregular bones. Pneumatic bone are the variety of the irregular bone which contains air-filled cavities within them. वो भी irregular के ही example है, but here the one change is they contain the air-filled cavity within them. So these bones are mainly located around the nasal cavity. For example, maxilla, ethmoid, sphenoid, etc. The last variety is sesamoid bone. Sesam is actually an Arab word and the meaning of which is seed. दाना, दाने जैसा, छोटा सा. Okay, so they are the seed-like bony nodules which develops in certain muscle tendons where they rub against the convex bony surfaces during the movement of the joint. मेनली ये सिस्मोइड बॉन है बॉडी में, जॉइंट के आसपास ही होंगे, आपको देखने को मिलेंगे. बहुत ही छोटे से स्मॉल बॉन है. वो जैसे बॉन मेम्ब्रेन में या कार्टिलेज में से डेवलप होता है, बट जो सिस्मोइड बॉन है वो जो मसल का टेंडन है उसमें से डेवलप होते हैं और बार बार जॉइंट में मसल बॉन के साथ रब होता रहता है, टेंडन रब होते रहते हैं, उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट होता है. ओके, सो इट्स अ यूनिक डेवलपमेंट फॉर दिस बोन. Patella is also the example of the sesamoid bone, but it is the
largest sesamoid bone in the body. This is the one-liner or MCQ or Viva question. Then comes classification according to the structure, microscopic and macroscopic. Macroscopically हम देखें तो they are divided into two parts, compact bone or you can say dense bone or cancellous bone or you can say spongy bone. Dense और spongy में divide होते हैं compact and cancellous. और microscopically they are divided into woven और immature bone और lamellar और mature bone. Macroscopically देखें तो most of the bones of the body have a basic structures of outer region of compact bone और inner region of the spongy bone. तो body के सब जो most of the bone है उसमें बाहर का जो for example this is the bone, तो उसका जो outer layer है it is made up of the dense bone means compact bone. बाहर से tough होता है, hard होता है और inside inner part is made up of the spongy bone. लॉन्ग बोन की बात करें तो द शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन फॉर्मिंग अ सिलेंडर दैट सराउंड्स द सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मेडुलरी कैविटी. जैसे मैंने आपको दिखाया था आगे वाली स्लाइड में, फीमर में जो शाफ्ट है उसमें सेंटर में एक कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड मेडुलरी कैविटी और वो स्पॉन्जी बोन होता है. वहाँ पे जो दोनों एंड है वहाँ पे कैंसिलियस बोन ज़्यादा होता है बट इट इज़ कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन. Okay, a flat bone of the skull, the cancellous bone is sandwiched between plates of the compact bone. जो flat bone है skull के plate जैसे उसमें sandwich जैसा structure होता है. Means outer layer is made up of compact bone or dense bone, inner layer is made up of compact or dense bone, and in between them there is a spongy bone. So spongy bone is sandwiched between compact bone. उसमें जो स्पॉन्जी पार्ट है उसको हम डिप्लॉय बोलते हैं और जो आउटर एंड इनर लेयर है कॉम्पैक्ट बोन का उसको हम आउटर और इनर टेबल्स बोलते हैं. ओके, हियर यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द लॉन्ग बोन. हियर यू कैन सी दिस इज द आउटर लेयर, this is the inner layer, right? So हम इसमें देखेंगे, we'll discuss this slide. Okay, the texture of the compact bone is dense, ivory like with no visible spaces on examination with naked eye. जो compact bone का structure है हम देखेंगे तो वो एकदम dense है, ivory like, उसमें कोई स्पेसिस नहीं दिखते हैं. उसमें 3 टाइप्स के लेमेला हैं, कॉन्सेंट्रिक लेमेला, इंटरस्टिशियल लेमेला एंड सर्कमफरेंशियल लेमेला. कॉन्सेंट्रिक मीन्स जो हेवर्शियन कैनाल है बीच में उसके आजू बाजू जो है उसको कॉन्सेंट्रिक लेमेला बोलते हैं. हेवर्शियन सिस्टम के बीच बीच में जो है वो इंटरस्टिशियल लेमेला है और सर्कमफरेंशियल मीन्स सबको सराउंड करता है, पेरिफेरी में जो है वो सर्कमफरेंशियल है. हियर यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर हेवर्शियन कैनाल और यहाँ ये कट पार्ट है ऊपर का, इसमें उसका देखो हेवर्शियन कैनाल का कट पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है. तो वो उसके आजू बाजू में एग्जैक्टली जो है दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक लेमेला. यहाँ पे जो है दे आर कॉन्सेंट्रिक लेमेला, इसके आजू बाजू में जो है वो कॉन्सेंट्रिक लेमेला. ओके, और जो साइड में यहाँ पे है पेरिफेरी में है दे आर दी सर्कमफरेंशियल लेमेला और इन बिटवीन जहाँ जहाँ पे है दे आर दी इंटरस्टिशियल लेमेला. राइट, सो कॉन्सेंट्रिक हेवर्शियन कैनाल की सराउंडिंग में, इंटरस्टिशियल बीच बीच में और सर्कमफरेंशियल पेरिफेरी में. अब हेवर्शियन सिस्टम क्या है? द हेवर्शियन सिस्टम consist of a canal surrounding the concentric lamella. It runs to the parallel to the long axis of the bone. जब फीमर का एग्जांपल लो तो फीमर की जो शाफ्ट है लॉन्ग एक्सिस है तो उसमें ऐसे जाती है हेवर्शियन कैनाल. ओके, और उसमें क्या होता है तो इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स,
nerves and loose connective tissue. These canals lined by endosteum and communicate with each other and also with the central medullary cavity with the surface of the bone by Workman's canal. We'll show you in the picture. Here you can see this is the Haversian canal along the long axis, और जो Haversian canal है वो एक दूसरे का साथ ये वाली और अंदर और बाहर के बोन के साथ मीन्स ये वाली वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक कैनाल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. ये आउटर साइड का बोन है, इट इज़ नोन एज पेरियोस्टियम. ये इनर साइड का बोन है, इट इज़ नोन एज दी एंडोस्टियम. ओके, और हेवर्शियन कैनाल को आउटर बोन के साथ कनेक्ट करती है ये वॉकमैन कैनाल. हेवर्शियन कैनाल को इनर बोन के साथ कनेक्ट करती है, दिस इज द वॉकमैन्स कैनाल. और एक दूसरे को कनेक्ट करती है ये भी वॉकमैन कैनाल है. ओके, blood vessels from periosteum और endosteum, outer layer and inner layer, उसमें से जो भी blood vessels है वो Haversian canal में कहाँ से enter होती है, through Workman's canal. और the compact bone is basically an adaptation to the bending and twisting forces. कोई भी bending या twisting force आता है bone के ऊपर तो उसके against का एक adaptation है. Here the another picture you can see here. This is the Haversian canal, contains blood vessels. The horizontal ones are the Workman's canal. This is the outer layer, that is periosteum, endosteum. Here you can see circular part. These are the cut section of the Haversian canal with concentric lamella surrounding them. Okay. Then comes cancellous or spongy bone. The cancellous bone is a meshwork of bony spicules. It consists of interconnecting rods and plates of bones called trabeculae, which encloses the large spaces filled with red bone marrow. The cancellous bone do not form the Haversian system. Cancellous bone means spongy bone. Spongy bone में क्या होता है कि ट्रिबेक्युलस होते हैं. ट्यूबरकुलस मीन्स इरेगुलरली ऐसे 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 बॉन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है. इफ़ यू हैव सीन दी हनीकॉम, जो मधुमक्खी का पूड़ा होता है, वो आपने अगर देखा है तो एग्जैक्टली उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो बहुत सारे रोड्स एंड प्लेट्स एक दूसरे के साथ ऐसे रैंडमली कनेक्ट होके पूरा जो फ्रेमवर्क बनाते हैं उसको ट्यूबरकुलर बोलते हैं. उसके अंदर के जो बड़े बड़े स्पेस होते हैं दे आर फिल्ड विद दी रेड बोन मैरो. इसमें कोई हेवर्शियन कैनाल या वॉकमैन्स कैनाल ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, एंड इट इज़ एन एडेप्टेशन टू दी कंप्रेसिव फोर्सेस. जो बोन के ऊपर कंप्रेशन आता है, दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, सो दे प्रोवाइड क्यूशनिंग इफेक्ट अगेंस्ट दी कंप्रेशन. कैंसिलियस बोन का फंक्शन ये है. कॉम्पैक्ट का क्या था, दे आर द एडेप्टेशन अगेंस्ट दी बेंडिंग एंड twisting forces, while this is the adaptation against the compressive forces. Okay, a very small difference between compact and cancellous that will revise all the thing. Density wise, the compact bone are dense, as you all know, and cancellous are spongy. Haversian system is present in compact bone, which is absent in cancellous. Arrangements of the bony lamellae, they are regular. लैमेला उसमें क्लियरली रेगुलर है. उसके 3 वेराइटीज़ है, कॉन्सेंट्रिक, सर्कमफरेंशियल एंड इंटरस्टिशियल. इसमें लैमेली टर्म यूज़ नहीं होता है, बट रोड्स एंड कॉन्स जो इरेगुलरली अरेंज्ड है. ओके, द लोकेशन इन द बोन में कॉम्पैक्ट बोन कहाँ पे होता है, आउटर साइड पे, और कैंसिलियस बोन इनर रीजन में होता है. बोन मैरो, एज यू ऑल नो, इट इज़ एब्सेंट इन कॉम्पैक्ट बोन while it is present in cancellous bone. and amount in the body by weight, तो 70% जो skeletal का weight है वो compact और hard और dense bone से बना हुआ है, while only 25% weight of the skeletal is made up of cancellous bone. Okay, so
all of you are clear about the difference. Here you can see the honeycomb appearance or arrangements of the tuberculi. Okay, and the space in between is made filled by bone marrow. So that was the classification according to the structure. तो हमने पहले देखा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप, फिर देखा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट. तो 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट. वन इज मेम्ब्रेनस बोन developed by membranous ossification, cartilaginous bones developed by enchondral or cartilaginous ossification, or membranocartilaginous bones developed by both membranous and enchondral ossification. Don't worry. Membranous ossification means जो बोन मेम्ब्रेन में से डेवलप होते हैं उसको मेम्ब्रेनस बोन कहते हैं, जो बोन कार्टिलेजिस में से डेवलप होते हैं उसको कार्टिलेजिनस कहते हैं, और जो बोन्स दोनों में से डेवलप होते हैं उसको मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स बोलते हैं. ये वाला टेबल आपको थरली याद रखना है कि विच आर द बोन्स डेवलप्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, कार्टिलेज एंड बोथ. Membranous, the bones from the cranial vault and facial bones developed from the membrane. Most of the bones of the body, the bones of the limbs, bones of the base of the skull, and bones of the thoracic cage and vertebra, they are developed from the cartilages. And only 5 bones of the body, they are developed from the membranocartilaginous both. They are mandible, clavicle, occipital, temporal and स्पिनोइड बोन. ओके, ये 5 बोन है. इनको याद रखने के लिए आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं. एम कॉस्ट, हियर एम फॉर मैंडिबल, सी फॉर क्लेविकल, ओ फॉर ऑक्सिपिटल, एस फॉर स्पिनोइड एंड टी फॉर टेम्पोरल. ओके, सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट of the skeletal system. I hope you all will enjoy this video. If you really feel my videos will help you to understand this subject better, hit the like button to encourage me for making more and more such videos. Subscribe this channel so you can instantly get the notification of any future uploads, and don't forget to share these videos to your friends, medical friends, whether they are studying in medical college, homeopathic, ayurvedic, physiotherapy, dental, nursing, everywhere anatomy will come in a first year. So the purpose of this channel is to help every students. Okay, thank you.